Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis that we do from Monday to Friday. So majorly we discuss about the Hindu Indian Express. So apart from that, as we know that newspaper is very important. As we know, here is the India and Canada tension worsened and Five Eyes Alliance, and the important article of the day today is that this is X. This is all three things that, or apart from that, the Supreme Court verdict and the amendments and bill that we discussed in the today newspaper analysis. So I hope you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. Let me confirm that if my voice is audible and visible to each and everyone here. Okay. So, as we know, the newspaper analysis is very important, and why it is important, because this gives you an idea like what kind of things that you need to keep an eye on that. And daily news analysis, we discuss about national news, we discuss about international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And we also discuss about Supreme Court verdict, which is very important, any amendments, any bills, which is very important in your exam perspective. So here is the quote of the day, that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today. Anyone start today and make a new ending. So this is the things that you should know about it. And sorry for the delay, students. So as we know that why is newspaper is important, because I told you that this gives you an immense idea like what kind of things that you need to keep an eye on that. And as I told you, that not each and every part in the newspaper is important for the exam perspective. And here we have the questions of the day. So at the end of the YouTube session, we'll discuss about the questions of the day. Here is the very first article. It's talking about like identify banks. So a report on global digital IDs brings Aadhaar limitation that risk on focus. So in unconsciously titled report on decentralized finance and digital assets. So that is the raising major red flags about Aadhaars. The India 12-digit universal identity global rating measure Moody investors. So government has rejected the claims that a certain investor service has, without citing any evidence on the basis, made sweeping assertion against Aadhaar, the most true digital ID in the world. It said in the statement Monday night. The concerns come a year after the country's top auditor, the Controller and Auditor General (CAG) of India, had pulled up the Unique Identification Authority of India (UIDAI) for Aadhaar deficient data management. So, a vigorous pursuit of Aadhaar after some initial hesitation under the present government
has manifested in the 12-digit number becoming mandatory for almost all welfare benefits to weaker sections, as well as activities such as opening bank or provident fund accounts, securing telephones, connections, and remitting taxes. So yet there have been also been instances of people being excluded from the basic service of lack of Aadhaar, or neighbors and senior citizens struggling to confirm their fingerprints and retain scans to prove they exist. So, having appointed a part-time chief to UIDAI last month, after 4 years, the government must seek an honest review of course correction. So, you should keep in mind that what is the function of UIDAI. UIDAI, which is Unique Identification Authority of India, and how the government is trying to working on this. So, you should know about UIDAI. But basically, Unique Identification Authority of India. This is statutory authority. So this is basically a statutory authority established under the provision of the Aadhaar Act 2016 by the Government of India under the Ministry of Electronics and Information Technology. And what was the vision for that? To empower residents of India with a unique identity and a digital platform to authenticate anytime, anywhere. So it is created to issue unique identification number UID, which is also known as Aadhaar number, to all the residents of India. So under the Aadhaar Act 2016, UIDAI is responsible for Aadhaar enrollment and authentication, including operations and management of all stages of Aadhaar life cycle and the system of issuing Aadhaar numbers to individuals. And what are the composition of UIDAI? So basically, इसमें जो होते हैं लोग chairperson होते हैं, 2 part-time members, and the chief executive officer, who is also member of secretary of the authority. So ये एक statutory authority है जिसको establish किया गया under the provision of the Aadhaar Act 2016 by the Government of India under the Ministry of Electronics and Information Technology. Now you should know about what is Aadhaar. ये एक 12 digit की individual identification number होती है that is issued by UIDAI to residents of India. Make sure this is the word used here, residents of India. It means that जो हमारे इंडिया में foreigners हैं, जो अफ़गान के लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं अभी, जो आपके बाहर के अफ्रीकन कंट्री के रह रहे हैं, उनके पास भी आधार कार्ड हो सकते हैं. इट्स नॉट, दैट्स वाई आधार कार्ड के ऊपर आपने देखी होगी लिखी होती है एक लाइन, दिस इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. आधार कार्ड होने इसका मतलब ये नहीं कि आप इस देश के नागरिक हो, ठीक है. सो बिकॉज ये आप एक वर्ड यहाँ मेंशन आप देखो, रेसिडेंट्स. रेसिडेंट्स कौन रह सकता है? रेसिडेंट्स का मतलब होता है, देखो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रेसिडेंट्स एंड सिटीजन. रेसिडेंट्स हु रिसाइड इन आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट्स. And we can say the citizen is that one who having voting rights, right? This is के पास voter ID है. Voter ID जिसके पास है, it means they have citizen, right? जैसे जिसके पास राशन कार्ड है, they are citizens of our country. So आधार कार्ड जो है आपका, वो जो है आपका एक रेसिडेंट्स के पास भी हो सकती है इंडिया में, ठीक है. सो 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड की जाती है. मेक श्योर ये 12 डिजिट की होती है, एंड दैट इज इशूड बाय UIDAI after a certain verification process. So to get an Aadhaar number, individual have to provide minimum demographic and biometric information, which includes इसमें name, date of birth or age, gender, address, mobile number, email ID, fingerprints, iris scan and facial photo. Make sure जो आपका पैन कार्ड होता है, which is called permanent account number, पैन कार्ड पे कभी भी my friends एड्रेस नहीं होती है, ये ध्यान रखना. कई बार वो पूछते हैं which गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डज नॉट कैरी द एड्रेस. उस पर डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका पर्सन का नाम होता है, और पैन कार्ड नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है मेंशन किया हुआ. उस पर कभी भी आपकी एड्रेस नहीं होगी, लेकिन आधार कार्ड पे एड्रेस होगी, ठीक है. सो एड्रेस इंडिया से बाहर की भी उसकी हो सकती है, और उसका एक टेम्प्रेरी एड्रेस वहाँ पे शो करना था. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. जैसे सपोज करो एक फॉरनर है, एक इंसान है जर्मनी का, उसे इंडिया में जॉब होती है गुड़गांव में, ठीक है. तो पुलिस वहाँ पे ऑफिस वाले कहते हैं आपको कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होगी, राइट. सो सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड इशू करना होता है, ठीक है, सो दैट ही कैन शो दैट कि आई एम द रेसिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री. मेक श्योर द सिटीजन ऑफ द कंट्री नहीं बोला उसने, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री.
So it serves as a proof of identity and proof of address for residents of India. So the Aadhaar number is a unique for each individual and will remain valid for a lifetime. And it will help the residents to avail of various services providing by banking, mobile phone connections, and other government and non-government services in due courses. So this is all about the Aadhaar, and I hope this one is very clear for each and everyone. Make sure guys, if you are new in this channel, please subscribe the channel. Here we move to the next one, G20 diplomacy and shifting world order. इस आर्टिकल को हम नहीं रीड करेंगे बिकॉज सिमिलर आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया था. जब भी आपके एग्जाम में पूछे आएंगे तो आपको पूछा जाएगा G20 के बारे में. G20 इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 जिसमें कि 19 कंट्रीज है. मेक श्योर G20 में मतलब 20 कंट्रीज नहीं है, इसमें 19 कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन है. इसमें एक यूरोपियन यूनियन है एंड 19 कंट्रीज है. तो G20 composition world largest economies including both industrialized and developing nations and account 90% of GWP gross world product and 70 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड का ही हिस्सा है. G20 में जितने भी कंट्रीज हैं 19 कंट्रीज हैं वो पूरे वर्ल्ड के 75 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के हिस्सा है. And 2/3 of the global population and roughly half of the world's land area. The G20 was founded in 1999 in response to the several world economic crises since 2008. So economic crisis के बाद G20 को establish किया गया. It has convened at least once a year with summits involving each member's head of the government or state, finance minister, foreign minister, other high-ranking officials. The EU is European Union represented, the European Commission and the European Central Bank. So basically in this article what we have discussed New Delhi declarations के बारे में. So New Delhi declarations that sharply differs from the Bali declaration. That was Bali declaration signed within November 2022 में, whereby majority vote the Russian Federation was condemned for its aggressions in Ukraine. And the difference between two declarations is that while Bali was accusatory in tone and that New Delhi sought a resolution to the conflict. So the New Delhi declaration does indeed seem have something to for everyone, right? So यहाँ बात करें Russia and China in turn are deepening their strategic alignment as well. Here we have the articles talking about with climate change tackling new disease scenario. अभी डिजीज एक्स के बारे में बातें चल रही है कि ये जो है आपका कोविड से भी 5 टाइम्स ज़्यादा होगा एंड WHO के ऑर्डर पर. सो इन द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज दिस मार्च द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका IPCC है जिसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, that delivers a stark warning. Climate change heightens the global risk of infectious disease, and the close relationship between climate and disease is being demonstrated every year. So, for instance, the periodicity of mosquito-borne disease that outbreaks no longer follows expected patterns. जैसे आपका डेंगू हो गया, that manifested in 2 or 3 peaks throughout the year. That variability in temperature, precipitation, humidity disrupt disease transmission cycle. So ये जैसे आपके डेंगू हो गए, ये एक mosquito borne disease है, right? So these also alter the distribution and vector like animal reservoirs and that hosts the parasite. So heat जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, जिसको ज़्यादा अगर हीट हो जाए तो हम कहते हैं CO2. So heat has been proven to interfere with the genomic structure of pathogens, changing their infectivity and virulence. क्लाइमेट चेंज से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है माय फ्रेंड्स? जैसे देखो, जिससे अगर क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, जो एक इकोसिस्टम होता है वो डिसबैलेंस होती है, राइट? एंड हैबिटेट लॉस फोर्स डिजीज कैरिंग एनिमल्स टू एनक्रोच अपॉन ह्यूमन टेरिटरी. सो ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐसे समझो, अगर सपोज कोई एनिमल है एंड दैट एनिमल फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फॉरेस्ट है वहाँ पे आपने घर बना दिए, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जो वहाँ के एनिमल्स होंगे, मंकीज़ होंगे या जो भी और एनिमल्स होंगे, उनका आपने एक हैबिटेट जो था वो ख़त्म कर दिया आपने, तो क्या करेंगे, घर में रहना शुरू कर देंगे. सो दैट हैबिटेट लॉस जो होता है माय फ्रेंड्स, दैट फोर्सेस डिजीज कैरिंग एनिमल्स टू एनक्रोच अपॉन ह्यूमन टेरिटरी.
that increasing the risk of human-animal interaction and the transfer of pathogens from wildlife to humans. So जो viruses होते हैं which do not harm animals can be fatal for animals, like Nipah virus कह सकते हैं. So Nipah virus, which has been causing outbreaks in Kerala for many years now, is a good example. And the analysis of 2020 published in Nature Climate Change warns that humans now face a broader spectrum of infectious agents than ever before. So diseases often find new transmission routes, including environmental sources like medical tourism, contaminated food and water from unreliable sources. While ecosystems shape local climates, climate change in transforming ecosystem, and this dynamic introduce invasive species and extend the range of existing life forms. So these climatic shifts are manifesting in a severe health crisis, including dengue epidemics in Dhaka and Kolkata and the Nipah outbreaks in Kerala. So why should we not be surprised at the recent outbreaks in Kolkata or Kerala as its unseasonality? Surveillance and reporting की बात करें तो over the past 2 decades, India has improved its reporting outbreaks, and उसके लिए आपने देखा होगा the integrated disease surveillance program was rolled out in a few states in 2007. So IHIP that was launched in 7 states in 2018, it added 20 additional disease conditions over IDSP and 13. And the current design of surveillance is not adequate for the emerging disease scenario. So अगर बात करें हम अपने country की, our country is too much vulnerable if we talk about in terms of disease concern. So India must launch one health and infectious disease control program by building greater synergies between the centers and state and their varied specialized agencies, animal husbandry, forest and wildlife, municipal corporation and public health departments that need to coverage and set up robust surveillance system. हाँ disease X के बारे में अभी जो है there is an obsession with an enigmatic disease X, but is a familiar annual cycle of known agents जैसे आपके influenza, measles, Japanese encephalitis, dengue, diarrhea among others that will continue to test the public health system. So though, my friends, climate change is not limited to infectious disease, it also exacerbates injuries and death from extreme weather events, that respiratory and cardiovascular disease and mental health issues. Now we move to the next article. ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. WHO ने अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया लूमिंग थ्रेट टू डिजीज X, and that suggests that it may already in the motion, posing a significant global health challenge. COVID-19 जो कि emerge हुआ 2019 में, आपने देखा था कि इसके consequences कितने खराब हुए थे, which emerged 2019, has already claimed nearly 7 million lives worldwide. Damkate Bingham suggested that disease X could be over 7 times as deadly as COVID-19 and may originate from an existing virus. Now we move to the next article here we talk about is the Five Eyes Alliance. As we know, Canada is a part of intelligence sharing group without countries also seen as India allies. और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जस्टिन ट्रूडो. आपको क्या इसका नाम आप क्यों लिख रहे हो इस पर? माय फ्रेंड्स, क्लैट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे आपको यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम जेलेंस्की के 4 स्पेलिंग्स दी हुई थी. सो मेक श्योर तो आपको यहाँ पे इसकी स्पेलिंग याद रखनी है. जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस दिया दैट इंडियन गवर्नमेंट may have potential links to the killing of separatist leader Hardeep Singh Nijjar in Canada. So Canada is a part of Five Eyes Alliance as an intelligence sharing grouping with US, UK. देखो इसमें कितने हैं Five Eyes Alliance के बारे में. इसमें कि US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, and also seen as India allies. So the origin of the alliance that can be tracked back to Second World War. The UK and US decided to share intelligence, and after successfully breaking German and Japanese codes respectively. 1943 में the Britain USA जिसको हम कहते हैं ब्रूजा, Britain and
Britain and USA, that is known to be a BRUSA. So BRUSA agreement that laid the foundation for what would become a UK-USA. एंड आपने न्यूज़ में देखी होगी एक की यूएसए के बारे में, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए, राइट, दैट अग्रीमेंट. सो यूके यूएसए जो था अपना, दैट वाज साइन इन 1946 और कनाडा उसको ज्वाइन करता 1949 में. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये ज्वाइन करते 1956 में, राइट. सो 2016 में जो 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट थे एंड रिव्यू काउंसिल्स दैट केम इनटू बीइंग, और इसके क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाते हैं. देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 आइज अलायंस के बारे में. 1946 में यूएस एंड यूके अग्री टू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस, राइट. आइज का था यहाँ पे 5 आइज की बात हो रही है, 5 आइज अलायंस. यूएस दैट एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA, फिर यूके गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स ने ज्वाइन किया, फिर कनाडा, फिर कोल्ड वॉर कनाडा ज्वाइंस अलायंस इन 1948. कनाडा कब ज्वाइन करता है ये जानना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिसेंट इन द न्यूज़. 1948 दैट फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 1956 एंड ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टरेट ASD ज्वाइन करता है. न्यूजीलैंड यहाँ पे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो GCSB. सो 1948 में कनाडा इस अलायंस को ज्वाइन करता है और कनाडा इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस अलायंस, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसको 1956 में ज्वाइन करते हैं इस अलायंस को. आई होप दिस वन क्लियर फॉर एवरीवन. Now we have the 5 आइज कंट्रीज, 9 आइज कंट्री, 14 आइज कंट्री. 5 आइज में आपके US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ठीक है. 9 आइज में आपका डेनमार्क है, फ्रांस, ये 5 तो हैं ही इसमें, और 4 आइज इसमें आगे, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे. 14 आइज कंट्री में ये दोनों आगे, 5 आइज और 9 आइज. इसके बाद 5 आइज और आगे इसमें जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन. ठीक है, ये सारे कंट्रीज में आगे. I hope this one is very clear for each and everyone. Now the office of the governor. इसमें बात की गई टसल सरकारी विजन के बारे में. सरकारी कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी, पंची कमीशन जो था अपना, पंची कमीशन, एंड दैट पंची कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी 2007 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में. तो हमें जानना है कि रोल ऑफ गवर्नर. So Article 131 of the draft constitution had provided an elected governor or a governor appointed by the president. Article 131 of the constitution says that there must be a governor that must be appointed by the president of India. हमारे इंडिया में जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? माय फ्रेंड्स, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज गवर्नर? सो पैरेलल टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर जो स्टेट का होता है ऑफ इंडिया हैव सिमिलर पावर्स एंड फंक्शन एट द स्टेट लेवल एज दोज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंट्रल लेवल. नॉमिनल हेड होता है ये. सो गवर्नर एक्ट एज अ नॉमिनल हेड वेयर एज अ रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर, सिमिलर लाइक अ प्रेसिडेंट. गवर्नर्स एग्जिस्ट इन द स्टेट वाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होते हैं माय फ्रेंड? जैसे दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है. दिल्ली क्या है अपना? दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरीज है. यहाँ पे आपके गवर्नर की पोस्ट नहीं होती, यहाँ पे LG की पोस्ट होती है. LG कोई टीवी का ब्रांड नहीं है, ये इसका मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर. दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, बट पुदुचेरी में आपके चीफ मिनिस्टर भी हैं, CM भी है, जैसे आप सिमिलर लाइक दिल्ली. चंडीगढ़ हो गया आपका, अंडमान निकोबार, ये सारे यूटीज़ हैं हमारे कंट्री के. तो यहाँ पे आपको LG की पोस्ट मिलेगी, गवर्नर की पोस्ट नहीं होगी. और एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट इन यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. नॉन लोकल अपॉइंटीज होती हैं. Few or no governors are local to the state they are appointed to govern. Constitutional provision, this is very important. Article 153 of the Constitution that provides a governor for each state. By virtue of Article 154, the executive power of the state shall be vested in the governor. That shall be exercised by him directly or through office subordinate to him in accordance with the Constitution. सो आर्टिकल 154 क्लॉज 2 हमारा ए कहता है प्रोहिबिट्स द गवर्नर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी. एक चीज़ आपने देखी होगी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जो स्टेट का गवर्नर होगा वो उस स्टेट का नहीं होगा, राइट. अगर कोई उत्तर प्रदेश का गवर्नर है
तो वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, ऐसे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं गवर्नर को, सो पावर कैन बी मिस यूज, देयर इज एन एप्रीहेंशन, राइट. सो आर्टिकल 163 जो है आपको कैटेगरिकली प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ चीफ मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एट एंड एडवाइस टू द गवर्नर except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. और यहाँ पे आपका जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स मेंशन की हुई है. Constitution discretion of governor includes when they have reserved the bill for the constitution to the president. He has to recommend the president's rule in the state. गवर्नर के पास इतनी पावर्स होती है, वो रिकमेंड कर सकता है, and the president is not bound to follow this. When given additional charge as administrator of union territory, और situational discretion of governor की बात करें for appointing chief ministers after no party get clear majority when the incumbent dies in the office, when he dismisses council of ministers on an inability to prove confidence in a legislative assembly, when he dissolves the assembly when it loses its majority. So execution of discretion beyond the constitutional permissibility is considered an attack to the elected government of the state and people's mandate. Now my friends, is the time to questions of the day. This is very very important. और ये आपका पहला क्वेश्चन है. Asking about with reference to parliamentary committee, consider the correct statement. पार्लियामेंट्री कमेटी का मेन काम क्या होता है? कोई भी चेंजेस लानी होती है उसका वो काम होता है. अभी हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो ऑल मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द हाउस. किसके? पार्लियामेंट्री कमेटी के. इट रिप्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस एंड इट must have the status of the consultative committee with any ministry at the center, and D, all are correct. So my friends, B is the right answer. So in short, a parliamentary committee means a committee that is appointed or elected by the house or nominated by the speaker or chairman. Make sure nominate कौन करेगा इसे? Speaker or chairman of the house. That works under the direction of speaker or chairman. Present its report to the house or the speaker. So that had a secretariat provided by the Lok Sabha or Rajya Sabha. और जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी एज दे डू नॉट फुलफिल अबव 4 कंडीशन. विच आर द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा. इसमें से कौन से होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. इसमें से कौन राज्यसभा के कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं? So the Estimates Committee, India, is a committee of selected members of Parliament constituted by the Parliament of India, the Lok Sabha, for the purpose of scrutinizing the functioning of government ministries and departments in terms of expenditure and utilization of funds. It also suggests alternative policy in order to bring about efficiency and economy in administration. It also examines whether the finance are laid out within the limits of policy that implied the estimates, and also suggests to the form which the estimates shall be presented to Parliament. And this committee, along with the Public Account Committee PAC and the Committee on Public Undertaking COPU, are the three financial standing committee of the Parliament of India. So the committee consists of 30 members, all elected from Lok Sabha. There are no members from Rajya Sabha. तो C जो था अपना ये estimate committee was the right answer.
वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो डी इज द राइट आंसर. So 2023 World Trade Report that is published by WTO explore the roles of international trade in building a more secure, inclusive and sustainable world. Shreyas scheme that was launched by Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, Ministry of Rural Development, Ministry of Finance. So my friends, this is Ministry of Education. Shreyas basically is for the OBC and SC student. Shreyas scheme is consisting of 4 central sectors of a scheme that played a significant role in empowering students from scheduled caste and scheduled tribe के लिए कौन सी schemes है? That is एकलव्य program. So एकलव्य program or scheme is for the scheduled caste. So scheduled caste and other backward caste in India since 2014-15. The service schemes as follow: free coaching schemes for SC and OBC, top class education for SC, national overseas schemes for scheduled caste, national fellowship for SC students. So these service schemes under the Shreyas umbrella have significantly contributed to the education and empowerment of SC and OBC students, that enabling them to pursue higher education and excel in their chosen field. And here we reach the last question. Operation Sajak. So Operation Sajak is conducted by the Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate, Indian Coast Guard and Indian Army. The right answer is option C. So Indian Coast Guard conducted a coastal security drill named Operation Sajak along with West Coast, and this drill aimed to involve all stakeholders in the coastal security system. Now this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions, please let me know in the comment section. And what is the tensions between, what are the issues between India and Canada? This will be discussed in the very detailed manner in the deep dive session. We'll meet you at 3 p.m. for this in today afternoon. So we'll discuss about what is the issue of India and Canada. So thank you so much for joining with us, guys, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions, please let me know in the comment section. And please share this beautiful session to your friends and family, and so that they will enjoy the session and they must know about what is happening around us. And make sure, if you are new in this channel, please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned. We'll meet you at 3 p.m. today for the deep dive session also, and we'll discuss about in much detail what are the issues and what are the bone of contentions between the two countries, India and Canada. Thank you so much for joining with us, and we'll meet you at 3 p.m. today. Bye bye and take care.